Yes, sir. Okay. So, as you know that in case of this 8051 microcontroller, there are total four different ports are actually available. So we can just check. When we talk about the ports, first thing is that all of you know the what is the utility of ports. On the ports, you can connect any type of the input or output device. This is the one of the things that I have to show on here is that output device. And when we talk about the data transfer direction, so the data transfer direction will be in the case of the input will be like in this manner. So in this case, I will say my data is going from input device to the ports of the microcontroller. While in the case of this one, I will say the data transfer direction will be like that one. Okay, so this portion, whenever any input device is putting some data on the ports of the 8051 microcontroller or any microprocessor, then this operation is resembles as called as a read operation, and this operation is called as a write operation. Okay, so if I talk about the data may be having the two format in the binary. Either it may be 0 or 1. If I'm talking about the 0 and 1, the 0 and 1 are corresponding to the voltage levels. Okay, so it depends upon that what type of the digital logic family you are using for that. According to it, we will decide that what type of the so 0 and 1 logic will be decided by the digital logic family through which we can say that microcontroller is designed. Any question into this slide? Any question till now? No, sir. No, sir. Okay, so we have already known this thing. We have already studied 8155 and 8255. The only difference is that they are just the peripheral ICs, and we are talking here in the terms of the microcontroller. Okay. So now come to the next portion. That this 8051, if I'm talking about 8051, this 8051 having the four different ports. This is my 8051. So it contains the four different ports. So one port is called as a port 0. I'm writing as a P0. Another is called as a port 1. Another is called as a port 2. And another one is called as a port 3. Whenever we are talking about the pins of that port, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. So the nomenclature will be start just like first digit will be defined the port, and another will be defined as a pin number. Okay, so for example, if I'm saying this is a P0.0, so what do you meaning by this one? This P0.0 is corresponding to what? For example, if I'm saying this is P0.0, so what do you mean by this? This is having the port 0, and this is called the pin. Okay, so ये port 0 की pin 0. For example, if like in this manner, if I want to show this one, this is P0.2, this is P0.3, P0.4, and like this. So it will go till P0.7. So this is called the port 0. Okay, so port 0 having the facility that we can use the port 0 for input and output. Apart from that, it's having the dual functionality that it can be used for the address and data bus also. So this is your AD0, AD1, just like the corresponding. If I'm saying कि pin 0.0, तो उसके पास AD1, AD0, AD1. मतलब आप this is called the time division multiplex address oblique data bus.
This is called address oblique database. Okay. So now similarly, so you have seen on here is that this P0 can handle the IO port, whatever the input and output device you can connect, so it can handle the data, as well as it has a facility that it can act like a multiplex address oblique database. So multiplex address oblique, if I'm talking about here, so this is only AD7. So it can just act like a multiplex address oblique database. If I'm talking about this port 1, so port 1 is here. Okay, just change here, and port 2 is here. So port 1 is just like this. We can say, if I'm saying, so the nomenclature 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this is the port 1. So if I say P1, क्योंकि ये पहला 1 जो है वो port को show करेगा, and the P number is 0. So this is P1.0. Okay, like this is P1.1, and up to this will go P1.7. So this will define as a port of P1. Okay, so here these ports can be used only for the IO, input and output. No dual functionality is provided on the port 1. Okay, similarly, you know that how many address bus and data bus is available into this one. It is just like a 8085 microprocessor. It contains the total 16 address buses and the 8 data buses. Okay, so you have seen that these lines 80 to 87 are time division multiplex. So we are having data bus over here, but we are having the remaining 8 lines. Okay, so we are having the port 2. So port 2 will be having the functionality that it will start like this one: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So we will say this is called P2.0, P2.1, P2.2. Like this one, it will go to P2.7. Now, the additional functionality that is provided, because क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि आपकी जो एड्रेस बस और डाटा बस है, यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स है, लेकिन अभी टोटल आपकी 8 लाइंस और बची हुई है. तो 8 लाइंस को अपन कैसे कवर करेंगे? We will go through A0, A8, A9, like this. It will go to A15. Clear? Is it clear? So it is having the dual functionality as provided by this one, is that it will act like a IO port. So we'll say this is act like a IO, as well as it's providing the facility that is called the higher order address buses. Okay, so here I will say this one is just like this. This is IO plus this is called time division multiplex oblique this one. So this is acting like a PIO. This is acting like just like a IO, and we are having the one more port, and that port is called as a P port 3. So port 3 will be having some different functionality, and it is called as a some extraordinary facility that it is having. So first we will draw the total 8 pins of this one: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So we can think this is your, what is the pin nomenclature for this one? If I'm writing, this is P3.0, P3.1, and up to this it is going to P3.7. Is it clear? So these are acting like a IO ports. But apart from these, this is having some different functionality. So different functionality is just like this one. This is acting like a receive the data. This RxD stands for receive the data. So if I'm talking about that, if I want to take any serial data from any type of the device, then I will use this receive data. Okay, so this P3.0 pin will be used as a receive data pin. Okay, so this we can handle. This is TXD, means transmit the data. Another pin, if I'm talking about, this is called INT0, interrupt 0, interrupt 1. So this is 0. Okay, so I'm putting here this one, interrupt 0, and this is the 2 pins for the timer. This is timer 0, timer 1,
and another one is write bar, and this is the read bar. So which is the read bar? This P3.7 is called the read bar. Okay, so this is called the additional function that is we have implemented on the port 3. So port 3 will be used for some different purpose. You can use this port 3 for IO, but if you don't want to use this one, if you are using for the it's for the different purpose, you can use RxD, TXD type of thing. So Rx stands for receive the data, TXD. So this is actually the thing that is if you want to go for the serial communication. So for the serial communication, you can use this receive data and transmit data. These two pins are actually for the interrupts. So if any device want to give the interrupts to this one, it can or give on the INT0 and INT1. So these two pins are for the timer, and you know this read bar and write bar is just like a control signal. Okay. Any question till now? Any question for this slide? सर जैसे P3 पिन में आपने जो बोला था ना, ये हर एक पिन एक स्पेसिफिक काम करता है, जैसे कि P3.7 वो रीड करेगा, ऐसा वेरी गुड। फंक्शन। बिल्कुल, लेकिन अगर वो उस मोड में काम कर रहा है तो फिर वो आईओ की तरह यूज नहीं होगा। ओके सर, है ना, वो आप चाहें कि दोनों एक साथ काम करवा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर अपन ने देखा कि ये जो मैं अभी इंटरनल सर्किट पे अगर अब बताऊंगा, तो इंटरनल सर्किट में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि या तो वो आईओ की तरह यूज होगा, या वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डाटा बस की तरह यूज होगा, या फिर जो है वो आपका ये एडिशनल फंक्शंस के लिए होगा जो पिन इस पे हुआ था पोर्ट 3 पर। एनी क्वेश्चन अदर, एनी अदर क्वेश्चन? BA group, any question? No, sir. I am going very slowly to clear the concept. भले ही थोड़ा सा हो पर मतलब थोड़ा ही कंटेंट कवर हो, पर धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। Is it clear? Okay. So now, as you know that we have already talked in the case of the 8155 and 8255 that whatever the ports you are talking, this port should be having the facility for the buffer and the latch. Why it's so? Because we know that whenever any input device wants to communicate with any microcontroller, so this device should be put the data on the tri-state buffer, and then after getting the proper control signal, the tri-state buffer will release the data to the data bus of the microprocessor or the microcontroller. And similarly, because you know that the response of the output device is very slow, so it is necessary that whatever the port you are using, this port should be having the latching facility so that it can store that data. And further, if the response time of that output device is very slow, then till this latch will try to store that data into the latch. Okay, so we know that from the architecture we have seen that it contains the total 4 ports. So we are having, for example, if I'm having this port 0, okay, first we'll draw all the ports. Port 1, another is port 2, another one is a port 3. First we'll write the functions for this one is that it contains total 8 lines, so 1, 2 and up to this is getting 7. So I'm writing this is 0 to 7 lines are here. Similarly, you can draw for each and everything that shows that it contains some pin, total 8 pins for each of the ports like this. Okay, so we know the functionality of this one, that this is used for IO as well as it is used for AD0 to AD7. Okay, and this port is only used for the IO, so this is simple thing is that, and this is used for IO as well as this is used for higher order address buses. So A8 to A15s are actually available here, and here it is used for IO and some additional function. So additional function we have seen, the additional functions are just like your serial communication, your interrupts, and all this type of stuff is normally called as a additional function. So now come to the point that if I'm talking about here only the ports 0,
So port 0 will be having, definitely it should be having latch. I am saying this is latch 0 and this is buffer 0. Why I'm saying latch 0 and buffer? Because this is pertaining for this port 0. Okay, that's why the name is given. And now what is the size of this latch 0 and buffer? Okay, if somebody is asking that what is the size of this, so size of this can be 8 bits. 8 bits. Okay, why 8 bits? Why 8 bits? Okay, because you know that the capacity of this port is to handle the only 8 bit of data. So if I'm using for this latch 0, this latch 0 will be having the direction of data will be like this one. Am I right? I drawn the correct direction for this latch 0. I drawn the correct line. Please respond. And in the case of the input buffer, the direction will be like this one. So similar cases will be available like this. Here I will draw here. This is my latch 1. This is my latch 1. And this is my buffer 1. Okay. Similarly, here I will draw for latch 2. And this is for buffer 2. And here again for latch 3. And this is for buffer 3. Okay. So I asked the question that I am drawing the correct direction or not for the data transfer. Answer say yes, because now what is here? If I draw here the black box like this, what is here? What is in the black box? So for example, this is your microcontroller. So inside this, what is this? Obviously, there will be some calculating unit which is transferring the data after the calculation to the corresponding port. So this calculation unit will automatically generate the data after the for the few instructions processing, and then further it will try to transfer the data on the corresponding ports. Or may possible that we can take the one example that I have connected the one input device, and the size of that input device is 8 bits. Okay, so if this input device is sending the data to this port 0, so first of all, this port 0 will be having, it will not come directly to the anywhere, it will store into the buffer 0. Okay, and then further from buffer 0 it will go to the corresponding processing unit. Like this, the operation will be performed by this 8051 microcontroller. So this operation is also similar to 8155 and 8255 also. And similarly, if you are having the something like that, after this calculation unit, for example, we can think about that this is your ALU of the microcontroller. So finally, this data will be available here. These data will further go to this port, and then it will go to the output device. Is it clear? Is it clear? This diagram is clear? Yes, sir. Okay, so the basic purpose of this diagram is that I want to show that each port will be having 8-bit latch and 8-bit buffer. Okay, the thing that you have to remember that you cannot directly transfer data to any of the pin of the corresponding port. First, you have to store that data into the latch, and then further it will go to the output device. Okay. Now, I am having one question from all of you from the digital electronics. Okay, if I draw this circuit, what will happen now? Please tell me. If I draw this circuit, what will happen? For example, if I connected one LED on here, and this terminal is ground, I connected one switch, and this is also ground. Okay, so this is your NOT gate, for example. What will happen? This is your LED. This is the switch. LED will glow. LED will glow or not? Or it is incomplete circuit.
सर इनकम्प्लीट है सर ये तो। Why? सर वीसीसी तो दिया नहीं सर, मतलब 1 भी तो। Incomplete. Yes, most of the people are saying incomplete. But सर कोई क्लॉक सर्किटरी नहीं है। what the problem you can face into this? This is called the incomplete circuit. Yes. So okay, we will draw this circuit once again. So if I draw this circuit like this, I connected VCC, and then this is my NOT gate, and this is my LED. This is my LED, and I connected one switch here. Okay, now tell me, and this portion is connected with the VCC. So whenever I am putting, for example, this switch is open, for example, S is open, what will happen? If S is open, LED will be glow. नो सर। Why? सर बिकॉज इन्वर्टेड आउटपुट आएगा ना उसका, तो दैट विल बी 0 If I'm 0। saying that if it is open, so this one is coming on here. If this one is coming on here, it will be converted as a 0, and finally LED is off. So when the switch is open, this LED is off. Okay. Now when I close the switch, what will happen? When I close the switch, the response will be changed. That, for example, the thing will be short circuited, and further what will happen, that this VCC will be converted into the 0. So this will be gone here 0, and it is 1, and this LED is forward bias on here, so LED is on. What problem you are facing? Can you please tell me? Is it a correct solution as a electronics engineer? Is it a correct solution as an electronics engineer? Can you do it directly? What will happen that if you are directly short circuiting any type of VCC, for example, here the VCC is here 5 volt. Okay, you are trying, when you are close the switch, you are immediately trying to contact or short circuit the VCC with the ground. So may possible that it's having very high potential of 5 volt. Sometimes it may lead that that remaining circuit, for example, this is the circuit, this सर वो inverter. आईसी के लॉजिक के हिसाब से हमें ऐसा रजिस्टर लगाना पड़ेगा ताकि वो वोल्टेज या तो आउटपुट में ही रहे। तो अगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैंने डायरेक्टली अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद में फाइनली मेरे यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको अगर ये किया, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ पर जो सर्किट है ये बर्न हो सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एकदम VCC को एकदम से ग्राउंड कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो सर्किट है, if it is very slow in the response, that circuit may be burned, or may be possible that circuit may lead to the some malfunctioning. Okay, so now what will happen? Now if I'm talking about here this type of the scenario when the LED is on, now finally when the switch is closed, if I'm talking about any type of microcontroller, sorry, this is M0. AT51 microcontroller, or we can take microprocessor also. So when the switch S is closed, may possible that this microcontroller may be having any type of the register inside as well. When switch is closed, okay, so may possible that it may be register this one as a response 0, as a response 1, sorry. Okay, now again if I'm saying my switch is open, what will happen? This register will take some time to reflect the correct scenario. Okay, so previously it was 1, still it contains the 1, okay, unless and until some steady state condition is achieved. Okay, so this may still, because we possible that कि आपने switch को तो open कर दिया है, अब open कर दिया है तो वहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 0 नहीं हो सकता है momentary आपका 1 हो। अब मान लो आपने switch को 1 कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, अब ओपन करने के बाद इट मे पॉसिबल दैट आइडियली तो उसको यहाँ 0 रखना चाहिए, बट अभी हो सकता है कि उसके अंदर 1 हो, क्योंकि पिछली बार जब आपने स्विच क्लोज किया तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स टाइम या उसका जो रिस्पॉन्स है वो अभी इसने स्टोर करके रखा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शनिंग इज नॉर्मली कॉल्ड, कैन एनीबडी टेल मी ऐसा क्या होता है इसमें? दिस कंडीशन इज नॉर्मली कॉल्ड एज ए फ्लोटिंग।
So this is called the floating condition for the input. Floating of input. ओके, फ्लोटिंग मतलब आप कहेंगे फ्लोटिंग क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आपका जो स्विच जब आपने पहले क्लोज किया, जैसे मान लो ये मेरा स्विच है, तो इस स्विच को मैंने क्लोज किया है ना, तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी जो भी होगा, जैसे मान लो वीसीसी से कनेक्टेड था, तो यहाँ पर जो डिवाइस है ये एक्चुअली यहाँ पर ये जीरो आएगा। ओके, तो जीरो आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिवाइस जैसे फंक्शन कर रही है वैसे वो फंक्शन करेगी। लेकिन फाइनली आपने क्या किया कि आपने इसको फिर से ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया। ओके, अब ये ओपन है, तो ओपन है तो ये जीरो कंडीशन में है या वन कंडीशन में है ये हम कह नहीं सकते। ओके, मान लो ये क्योंकि पहले आपने इसको क्लोज किया था, फिर आपने इसको ओपन कर दिया, तो जो क्लोज वाला रिस्पॉन्स है वो हो सकता है कि अभी स्टोर्ड हो उसके पास में, माइक्रो कंट्रोलर के पास में। सो ये वाली जो चीज है, जब आपका स्विच ओपन है तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग। नाउ माइक्रो कंट्रोलर विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये जीरो है या वन है, थोड़ी देर बाद उसको समझ में आएगा कि ये जीरो हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिवाइस है उसको, सॉरी ये वन हो चुका है, तो जो भी डिवाइस है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, so the basic thing is that to avoid this type of the scenario, we normally use some type of the, as the somebody has told, the correct reason for that one is that you have to use, you cannot directly use VCC, you have to use some register in between your IO device and the ground. So this was our inverter, so this is LED. Okay, so it was the switch here. Now you can think about that, ये लगाने से यहाँ क्या चेंज आया, कोई बताएगा ये लगाने से यहाँ पे? This is called, for example, this may be considered as a one type of your IO device. Okay, IO device. Okay, so now come to the point on here. ये रेजिस्टेंस लगाया, तो रेजिस्टेंस किसके बीच में लगाया आपने? Between the VCC and IO, you have connected the one resistor. Okay, and that resistor, because it is trying to pull up your voltage, so that type of resistor is called as a pull-up resistor. This pull-up resistor will try to avoid whatever the switch is facing a condition of the floating input type of thing is that. So this switch will try to avoid this floating condition, because you can think about that. First, when you just close the switch, for example, if anybody will say, if I close the switch here, what will happen? Here I am getting zero. So this is inverted here. And finally, my LED will be on. So if I say here, my LED will be on. If I open it, so in the case, immediately what will happen, that few of the first thing is that रेजिस्टेंस लगाने से जो आप शॉर्ट सर्किटिंग के कारण जो आपकी डिवाइसेस इधर खराब हो रही थी, या आपके आईओ पिंस पे जो बर्डन आ रहा था, वो रेजिस्टेंस लगाने से आपका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो एक लिमिटेड करंट यहाँ से पास होगा. So this limited current will be flow on through device and be possible that your device will be completely safe. It will not be burned out. Okay. So when the switch is open, so for example, if I draw some other condition with this yellow color like this, what will happen now? So here now my complete VCC will not be flow at all. For example, this is my VCC. So VCC will be having here a logic as 1, but this is not the complete VCC because some voltage will be drop on here. So your device will be safe on here. So you can think about that. Here I am getting 0 and your LED will be off on here. So the thing is that because it is trying to pull up your voltage between the IO device and your VCC, that's why the name is given to this one as a pull-up register. So whenever you want to avoid this type of the floating condition, you have to use the this pull-up register. So in the few cases, whenever we're talking about any type of the microcontroller ports, it is possible that we have to use because we are having the total 8 pins in the IO port. So sometimes in the case of the port 1,
we have to it is whenever it is completely using for IO device. So अपन ने देखा कि IO device के लिए अपना कौन सा पोर्ट है जो completely यूज होता है, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही है कि वो completely यूज होता है फॉर पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 में पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास में टोटल 8 पिन्स हैं, वहां पर आपके पास में ये पुल अप रजिस्टर होना कंपलसरी है। ओके, सो हियर यू कैन कनेक्ट दिस एलईडी एंड दिस एलईडी विल बी ऑन। Okay, so in this case it will be on. Any question into this? Yes. Now I will tell you one more thing is that here I had shown the case just like whenever I will connect the any register between the VCC and the IO device, that register is normally called as a pull-up register. And there is another concept of the pull-down register when you connect that registers between the IO and between the IO and ground. So that type of register is normally called as, if you are connecting some R, so this R is normally called as a pull down register. Mostly in the microcontroller case, we are using this pull up register. So if anybody is saying that what is a pull up register, so we can think about that. We have seen that in the case of this one, we are using the port P1 to port this P1.0 to 1.7. This is used only for the IO device. It is not having the any other function just like P0. Sorry, I done this. No, it's P2 and P3 like this. So it is used for IO. So if I draw the diagram for this with a pool of registers, so for example, this is your microcontroller. So it's having the total 8 pins. For example, if I'm saying P1.0, P1.1, just like 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, and 1.7. So each and every line, or we can say each and every pin whenever you are making the circuit. So it is a compulsory condition for that one is that you have to connect the pull-up register. So if I connect the one pull-up register here, one pull-up register with this line, one pull-up register with this line, like this. Okay, so this is connected with the VCC, and this VCC is according to the range of the microcontroller. So for example, here I am considering the 5 port, and the value of this one I can consider as a 10K, 10K, and 10K each. So this is called your port is configured or connected with all the types of pull-up registers. So this is the case of the pull-up register. So you can draw here. I am drawing for the remaining section. So please complete here the circuit like this. Okay. So all these pins will be further connected with the ground. So if I'm saying if 3, 4, 5, 6, 7, 8. So all these things will be connected with the ground. Okay. Clear? Okay. So this is called the pull-up register concept for port 1. Okay. Why we are using this pull-up? Because we have to avoid the floating condition. Make possible that the floating से होगा क्या? आप अगर कोई डिजिटल डिवाइस अगर आप बना रहे हो तो उसमें सिंपली आपको पता नहीं चलेगा कि अभी 0 आ रहा है कि मेरे पास 1 आ रहा है। मान लो कोई इनपुट डिवाइस आपके ऊपर 0 राइट कर रही है, 1 राइट कर रही है, आपको खुद को पता नहीं चल पाएगा क्योंकि हो सकता है कि वो फ्लोटिंग हो। तो फ्लोटिंग में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं रहता है कि वो 1 या 0। सिंपल सा मीनिंग ये है ना। तो उस तरह की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू यूज दिस pull-up register. So pull-up register will give the clear condition of the digital logic that is flowing on this one. Okay. Any question for that? Any question? Yes. Concept clear हुआ? What is pull-up register? Can we go for the further port 1? Okay. Okay. BA group, what is your condition? Things are clear to you? Yes, Okay. For this, you can follow the book of Mazidi and Ayla, as the madam has told you. If the concept is not clear, but I tried to
I had taken one LED circuit and I shown you that when the LED will glow, suddenly you will connect. So most of the thing you have seen that अगर आपने कहीं VCC को ऐसे डायरेक्टली ग्राउंड करने वाला सर्किट आपको बहुत कम दिखेगा. अगर किसी ने डिजाइन भी किया है तो वो गलत डिजाइन किया हुआ है. ठीक है. So this is very important thing. So now come to the point on here. Now we are coming that what are the internal circuit that is available inside any port. Okay, so we will go one by one with the. So first we will starting with, because we have talked here the port 1. So we are talking about here port 1. So as you know that if suppose if I had taken that here, this is my microcontroller. So inside the microcontroller, if I'm considering one D flip-flop, so this is my D, this is my Q, this is my Q bar, and this is my enable. Can anybody tell me that when the data will be flow here? So if I'm taking here, this is my internal data bus. So I'm saying this is my internal bus on which my input data is coming, and this my Q, because this is the output of this D flip-flop. So if I connect the one buffer with this, I connected the buffer. So how many pins the buffer will be having? There are total, because this is the one pin, this is the second pin, and the buffer will be having the third pin. Okay. So if the microcontroller want to read it, so it can be read with the help of, because the output is generated with the latch. So this is because इसको अगर enable करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान लो ये मेरा input terminal है, ये इसका input terminal है और इसका output terminal है. Okay. इसको जब तक मैं enable नहीं करूंगा तो ये मेरा input output पे appear नहीं होगा, because it is called as a one type of tri-state buffer. So here I have to give the proper logic level to out this input to flow on the output. So this enable pin of this tri-state buffer is called as a read latch. Okay, so whenever I am giving here read latch as a 1, this input will be flow from input to output. Okay, is it clear? Yes. Now here at the enable, if I'm saying this is one latch, ना ये latch कब write करेगा? चलो सब अपने माइक को जरा ओपन करो और मेरे को इसकी वर्किंग बताओ. विजिबल है सबको? अभी तक का सर्किट क्या कहता है वो मुझे बताओ. अभी तक का सर्किट क्या कहता है? लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं. अंकित सोलंकी, उसके दिमाग की बत्ती जल गई, मीटिंग छोड़ के चला जाते. Whenever I am asking the question, people start to, and all these things are actually recorded. Anshul Mishra has left the meeting, है ना? This is the one student should be having the habit like this one. कि जब भी आपके पास में क्वेश्चंस आता है आप उसको फेस करो. लाइफ में कभी डर के भागना नहीं. सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है. कैसे काम करेगा? बीए ग्रुप कोई बताएगा कैसे? सर जब तक वो डी फ्लिप फ्लॉप का इनेबल को एक्टिव हाई पल्स नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगा. जब तक उसको एक्टिव हाई पल्स नहीं मिलेगी. ठीक है, इनेबल पे. ओके फाइन. ठीक है, तो मान लो मैंने इसको एक्टिव हाई दे दिया. मान लो आई एम राइटिंग हियर दिस इज द पिन व्हिच इज कॉल्ड एज अ राइट टू लेच. राइट टू लेच. ओके, अब ये कहेंगे आपने 1 देना था, आपने राइट टू लेच लिख दिया. तो ठीक है ना, अपन एक पल्स देंगे उसको. वो पल्स अगर मैंने मान लो वो पल्स मेरी ऐसी है, ठीक है, तो ये मेरी लो थी, अब ये हाई है. अब बताओ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 है तो कैसे काम करेगा ये? सर फिर क्यू पर भी 1 चला जाएगा. राइट टू लैच अगर और फिर हाँ इनपुट रिफ्लेक्ट हो जाएगा आउटपुट पे. एक मिनट, अपन स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो एक डाटा है 1, वो मुझे इसके अंदर लेच करवाना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पल्स यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी जो इस इनेबल को इनेबल करे. तो मेरा लो टू हाई पल्स मैंने अप्लाई की, ये 1 को अंदर होने का मौका मिला, एंड इट विल गो टू द क्यू. ओके, सो दिस 1 विल बी अवेलेबल हियर. Similarly, at the Q bar, the 0 will be available. Okay, but this will be present. It will be stored here
It will not go to the output unless and until I am not giving this read latch equal to 1. Okay, so when I put this one as again low, what will happen? What will happen? Tell me. This will be latch. This will be latch inside. Now one will be remain inside this one unless and until this will become again high. Okay. So जब तक ये enable आपका open नहीं होगा, जब तक ये latch आपका खुलेगा नहीं, आपका यहाँ पे internal bus पे कुछ भी हो वो यहाँ पे flow नहीं होगा. And this you know that the Q and Q bar are just the complementary of each other. Okay. So this portion is clear to all of you. Yes or no? Yes sir. Yes sir. 84 स्टूडेंट्स अभी हैं और साथ में अभी 6 बीए ग्रुप है. अगर आपको यहाँ तक, अच्छा 4 तो भाग ही गए, 80 हो गए अब तो. ठीक है, ठीक है. बीए ग्रुप क्लियर हुआ? कुछ नहीं, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ही है सेकेंड ईयर का ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. नाउ कम टू द पॉइंट. फर्दर दिस इज सर्किट इज जस्ट लाइक दिस, that this is connected because you know the port 1. So port 1 will be used for what purpose? Anybody? Port 1 will be used for the what purpose? Port 1. Sir, input output. This is used for input and output. So whenever you are drawing circuit for any of the port, please remember that you should know the duty of that port. So for example, if I'm talking about the port 0, so port 0 will be used for the IO as well as the time division address oblique data bus. Okay. Whenever talking about the port 1, it is plain used for the IO ports. So this Q is further connected with the one type of the MOSFET. Okay, so if I draw here the MOSFET, and if I am connecting this VCC not directly, I am using one pull-up resistor here. So this, okay, is right correctly. Okay, so this is my VCC. Okay, this VCC and this is my ground terminal. Can anybody tell me that what will happen here? What will happen if I'm taking here the output from here? So this point I am taking as the output. So this is my one of the pin of this one. So if I'm taking, this is my P 1.0. So anybody, what is the 1.0? सबसे पहले बताओ 1.0 है क्या? सर पोर्ट 1 की 0 पिन. ओके, तो अगर मैं ये सर्किट अगर एक पिन के लिए बता रहा हूँ तो ये सेम के सेम सर्किट मेरी जो ऑटो पिन है वो उसके लिए रिपीट होगा. नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन दिस इनपुट, सॉरी दिस आउटपुट टू अनदर ट्राई-स्टेट बफर. Okay, this tri-state buffer, and they have connected this one to this internal bus. अब अपन इसको वन बाय वन देखेंगे ऐसा करने से हुआ क्या. So I am writing, this is called the read pin. कोई बताएगा इसमें क्या डिफरेंस हुआ और यहाँ कनेक्ट करने का चक्कर क्या है? पहले अपन सर्किट की बात कर रहे हैं, अपन इसकी वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं. Please tell me why it is so. Please tell me. और ये ऑपरेशन कौन सा होता है? रीडिंग हो रहा है या राइट हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली दो चीजें यहाँ पे, आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो. देखो आपके पास दो अलग अलग ट्राई स्टेट बफर है. सो इफ आई एम सेइंग दिस इज माय ट्राई स्टेट बफर 1, which one? This one. Okay, this will be enabled when you are giving the read latch equal to 1, and similarly this is your tri-state buffer number 2. Okay, this will be enabled when you are writing read pin equal to 1. Okay, so depending upon the what type of the operation that you are doing with this one. So इसमें ऐसा है कि जब आपको लेच को खुद को रीड करना हो तो आपको ट्राई स्टेट बफर 1 को इनेबल करना पड़ेगा,
और यहाँ से अगर कोई चीज आ रही है आपकी पोर्ट से, मान लो कोई यहाँ पर आपने इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया यहाँ पे P1.0 पे, और आपने इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया और आपको ये रीड करना है, तो ये रीड करके सीधे आपको यहाँ पर इसके ऊपर इंटरनल बस के ऊपर वो लॉजिक शो कर देगी जब आपका रीड पिन यहाँ, क्योंकि इसके लिए उनको ट्राई स्टेट बफर 2 को इनेबल करना पड़ेगा, और ट्राई स्टेट बफर 2 जब आपका इनेबल होगा जब आपकी रीड पिन 2 जो है वो आपकी 1 होगी। ओके, सो दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर। जब मेरे को लेज को रीड करना है, आई विल यूज ट्राई स्टेट बफर इक्वल टू, ये जो मेरा रीड लेज है इसको मेरे को 1 करना पड़ेगा, और ये ऐसा घूम के यहाँ आ जाएगा पहले वाले केस में। ठीक है, तो एक बार पे आप एक ही कर सकते हैं, या तो रीड लेज करेंगे या रीड पिन करेंगे। सिमिलरली ये आ जाएगा और ये यहाँ पे ऐसा आएगा, बट ये आएगा कहाँ, ये इंटरनल बस पे। तो इंटरनल बस पे आप कहेंगे कि सर ये भी आ गया, नहीं, ये सब एक टाइम पे होगा। तो एक्चुअली जब मेरा, जैसे मान लो मेरे को अगर फर्दर डाटा, अब मैंने सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो ये पूछा था कि ये बताओ कि ये राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है कि रीड ऑपरेशन हो रहा है। ये जो मैंने ऑपरेशन यहाँ बताया था, जो लॉजिक लेवल लिखे, राइटिंग हो रहा है कि रीड हो रहा है? टेल मी। यस, एनीबडी? रीड हो रहा है। रीड कैसे हो रहा है बेटा? रीड कैसे हो रहा है? क्या किया अपन ने? जो बीच बीच में आप लोग रिकॉर्डिंग ये जो छोड़ के जा रहे हैं मीटिंग, इनके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होने वाले नहीं है, भले आप कितनी भी बार रिकॉर्डिंग को आगे पीछे करके देखते रहे। मैंने थोड़ा सा भी घुमाया क्वेश्चन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। यस्टरडे यू हैव सीन द वन असाइनमेंट, वो कहीं भी आपको कहीं भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो सब क्वेश्चन ऐसे ही माइंड से बने हुए हैं, है ना। तो अपन कोई ओपन डिस्कशन फोरम में बैठे हैं जहाँ पे मैं आपसे जिस क्वेश्चन कर रहा हूँ आप उसको गेस तो करो। जैसे अभी इसने कहा कि रीड हो रहा है, तो मैंने उसको कोई पनिशमेंट तो नहीं दिया ना, मैंने उसको कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। क्योंकि राइट हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे इसको राइट करवा रहे हो ना, इसको लो से हाई करवा के, तो इंटरनली लेज पर आपने कोई ना कोई इनपुट यहाँ पे राइट करवाया, तो ये राइट वाला ऑपरेशन हुआ। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 0 मिला तो इसको यहाँ पे क्या आएगा, अब क्या होगा? जैसे मान लो ये यू आर सीइंग द कनेक्शन, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज स्टार्टिंग। इन्वर्टिंग सर्किट है वो तो। एक मिनट, फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू द स्टार्टिंग। आई हैव रिटन 1, मतलब एक मेरे पास 1 जो लॉजिक है वो डी पिन पर अवेलेबल है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इसके अंदर लेज करवाना है। तो कंडीशन ये कहती है कि ये पहले वाला जो आपका इनेबल है ये लो टू हाई होके जब जाएगा तो ये 1 आपको इंसर्ट होने का चांस मिलेगा। इमीडिएटली आपका जो क्यू होगा वो 1 हो जाएगा एंड इन्वर्टेड विल बी कम टू द क्यू बार, so here 0 will be appear. Okay, so immediately when this pin will become high to low, if I am talking about this 1 will be stored into the ledge unless and until this will again change the condition. Okay, so now here I will say here at this connection I am getting a low input. So if I am getting a low input just like this, so immediately what will happen, this MOSFET will be go into the off condition. If it will go into the off condition, then the whole of the VCC will be go here. So finally at the P1.0 what I am getting, the output as 1. Is it clear? Is it clear? So this figure here trying to explain you that you are writing here 1 and you are getting here 1. Okay, so at this pin you are getting P as 1. Is it clear? Is it clear? Yes or no? 1 लिखा था माइक्रो कंट्रोलर ने डी फ्लिप फ्लॉप पर अपनी एक पिन पर, मान लो वो पिन 1.0 है, आपने 1 लिखा, मेरे को 1 मिल गया। ठीक है, चेंज करें इसको। अब मैं को ये बताओ अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या होगा। मैं एक नया सर्किट फिर से ड्रा कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में ड्रा करते रहो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर क्यू बार एंड दिस इज योर इनेबल पिन। ओके, so this is your D, this is your Q, this is your Q bar
and this is your enable. I'm not writing the name here because in the last figure I have shown you, so there is a one tri-state buffer which is connected like this. Okay, this is having one another terminal. Clear? Okay, and this is connected with this bus here. Okay, and this is the simple, we can say, the one terminal, and this is connected with some MOSFET. And this is your VCC. And this is the P1.0 pin. So this is P1.0. Okay, this is the output of this. And further, what they have done, they have just, for reading purpose, they have used one tri-state buffer again. अब आप किसी को यहाँ पे पूछ भी सकता है कि बस सर ये बार बार ट्राई-स्टेट बफर लगाने से क्या होगा, क्यों लगा रहे हैं हम ट्राई-स्टेट बफर? तो ट्राई-स्टेट बफर लगाने से आपकी लाइन पर जो भी कंट्रोल है, मतलब जो भी डाटा फ्लो हो रहा है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है. जब तक आप उसको ट्राई-स्टेट बफर को इनेबल नहीं करते हैं, वो आगे नहीं जाता है. ठीक है, तो ये इसका एंट्री पॉइंट है. यहाँ पर इसकी चेकिंग होगी. चेकिंग के लिए जरूरी है कि यहाँ पे हाई होना जरूरी है, सिमिलरली यहाँ पर भी हाई होना जरूरी है. तो ये वाला हाई सिर्फ इस लेज को, मतलब अगर हमें कहें ये ट्राई-स्टेट बफर सिर्फ इस लेज का आउटपुट शो करता है ना. कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको इसको लेज को रीड करने की, तो उसके लिए मेरे को ये ट्राई-स्टेट बफर यूज करना पड़ेगा. अगर मेरे को सिर्फ मैं सीधा मेरी जो पिन 1.0 से कोई डाटा अगर मेरे को रीड करना है, तो मैं उसको इस तरह से रीड कर सकता हूँ. बट मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं. अब मैंने कहा कि यहाँ पे 0, अब मेरे को बताओ, और ये पिन मैंने इसको चांस दिया कि आप अंदर जाओ, तो ये लो से हाई हो गया, मतलब ये हाई. दिस इज H, दिस इज L. ओके, ये लो से हाई हो गया. अब मुझे बताओ क्या होगा. दिस विल बी 0. दिस विल बी 1. ओके, व्हाट विल हैपन फर्दर? आउटपुट 0 रिफ्लेक्ट हो जाएगा. This will be on. This will be on means some current will be, or we can say all the currents will be flow, because it is acting like a completely short circuit. So here I am getting 0. Here I am getting 0. So if you say, if I write 0 on the port 1.0, I am getting 0. Okay. So here we are talking about the port 1. Similarly, line in line. So हमने अभी तक जो ऑपरेशन देखा वो देखा कि ये जो पोर्ट 1 है, इसके ऊपर डाटा राइट कैसे होता है. अब रीड वाला बताओ मुझे, रीड में क्या करेंगे? रीड में क्या करेंगे बताओ. रीड कैसा होगा? सर्किट वही रहेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं है. रीड बताओ मुझे कैसे काम करेगा. I will draw the circuit once again. So this is my D flip flop, D, Q and Q bar, and here this is my enable pin. So this is like this. This is my Q bar. This Q is connected here with one tri-state buffer. Okay, and this Q bar is connected with the some MOSFET. Here I had taken one VCC, ground, and this is the P 1.0 like this, and here I am getting the one feedback line. So this is my one feedback line like this. Here again the next tri-state buffer is connected. This is my next tri-state buffer. Okay, and it is connected with this line, which is acting like a control bus, internal bus. So these two lines will be short circuited here, and similarly this line will be short circuited. Now who will explain me? I want to talk about the port 1. This is tri-state buffer. Okay, so here I want to read. So what is the direction of read now?
You just tell me. Open your mic and just tell me. Unmute yourself and then explain me. What is the direction of read? रीड का मतलब समझे आप, कहां से कहां तक होना चाहिए? पोर्ट 1 से लैच के इनपुट तक। हाँ, मान लो कि अगर मेरे पास, मेरे को अब जो मेरी डाटा ट्रांसफर की डायरेक्शन होगी ना, वो ऐसी होगी, ऐसा, इस तरह से कि यहां से मुझे रीड करना है और मेरे को मान लो रीड 0 करना है, तो क्या कैसे रीड करेंगे इसको? बताओ। अपन एक कंडीशन मान के चलेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ये एक मैंने यहाँ पे 0 दिया मान लो, है ना, इसको मुझे 0 दिया, 0 दिया, और इसको मैंने टर्मिनल को कंडीशन भी ऐसी दे दी कि ये हाई है ना, तो दिस 0 विल बी गो हियर, 1 विल बी अपीयर हियर, 1 विल बी अपीयर, देन दिस विल बी ऑन। जैसे ही ऑन हुआ तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुआ, ठीक है। और मान लो मेरे पास में इस पिन पर जो लॉजिक है वो भी 1 है, तो 1 क्या है, कोई बताएगा 1 क्या है? 1 मतलब ये भी एक लॉजिक लेवल है ना। मान लो ये प्लस वीसीसी इज इक्वल टू +5 को मैं कह रहा हूँ 1 है, इस वीसीसी की बात नहीं कर रहा। मान लो यहाँ से जो मेरे पास कोई भी डिवाइस अगर कोई सिग्नल सेंड कर रहा है, भले वो 2 वोल्ट सेंड कर रहा है, मतलब वो तो एक लॉजिक लेवल है ना, तो ऑब्वियसली ये कुछ करंट है। मतलब मैंने यहाँ कहा कि ये जो आई फ्लो हो रहा है ये वीसीसी के कारण हो रहा है, जो कि इसकी पावर सप्लाई है, और ये जो यहाँ से अगर ये पिन 1 है तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वो करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो यह जो करंट फ्लो हुआ है इसको मैंने कहा आई, और आपका ये लॉजिक के करंट फ्लो हो रहा है आई लॉजिक, तो व्हाट विल हैपन थ्रू दिस मॉसफेट, the two different current is flowing, okay, one is flowing through this IVCC and another is flowing through the I logic, okay. So it may possible that if the double current will be flow, and it may possible that this device will be burned out, so may possible कि आपका हो सकता है कि आपका जो पोर्ट 1 है उसकी एक पिन यहाँ पे खराब हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ना। मतलब मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे इस मॉसफेट से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कुछ 2 मिली एम्पेयर का है ना, तो 2 मिली एम्पेयर इसके कारण ही फ्लो हो गया आईवीसीसी के कारण, तो अगला वाला करंट जो है वो इसके कारण भी आ रहा है, मान लो ये 1 मिली एम्पेयर का है तो 3 मिली एम्पेयर फ्लो हो गया टोटल, तो पॉसिबिलिटी ये है कि डिवाइस यहाँ पे जो है ये बर्न आउट हो जाएगी, सो दिस मॉसफेट में भी बर्न आउट। अब आपको मेरे को बताना है कि मेरे को रीड करना है 1 को, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन फॉर दैट। सर इसमें भी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा करंट लिमिट करने के लिए? नहीं बेटा, लगा हुआ है ना रेजिस्टेंस, तो आप देखो ना, वो फ्लोटिंग कंडीशन को तो लगाने के लिए मेरा लगा तो है पुल अप रजिस्टर, यहाँ पे ये लगा है ना आर। सर वो इनपुट पिन पे अगर लगा देंगे तो? इनपुट पे नहीं, और कोई जल्दी बताओ, मेरे को कॉलेज जाना है। सर एक और बफर लगाना पड़ेगा जहां से आई लॉजिक जा रहा है। इस सर्किट को देख के कुछ आइडिया लग रहा है? मैं फ्राइडे की क्लास में और आपसे डिस्कस करूंगा ये। इनेबल पे लो पल्स दे दोगे भाई, तो इनेबल पे लो पल्स दोगे तो वो तो 0 तो स्टोर हो जाएगा ना अंदर, उसको लो देने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपको लेच का फंक्शन कराना है, तो लेच है ना ये तो अगर आपको लेच करवाना है कि नहीं करवाना है वो तो आपके हाथ में है, तो लेच तो करवाना ही है ना। कैसे करेंगे आप मुझे बताओ, ये सर्किट आपके पास बना हुआ है, मेरे को सोच के बताना नेक्स्ट क्लास में, है ना। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं क्लास को, मैं बस इतनी सी हिंट दे देता हूं कि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपका ये जो है मॉसफेट ये ऑफ होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। ऑफ कब होगा? कब 1 कैसे पास करेंगे? नॉट गेट लगा। नहीं बेटा, और बताओ।
और कोई आइडिया? और कोई आइडिया? बेटा अगर यहाँ पर अगर मैंने 1 दे दिया, मान लो अगर इसको मैंने 0 ना देते हुए अगर 1 दे दिया, है ना, अब आप, मैं इस फिगर के ऊपर ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये 1 दे दिया तो फाइनली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा मतलब अब आपके सर्किट को एक ही पाथ मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपका 1 है तो 1 है तो सीधा ये 1 यहाँ आ जाएगा। कब आएगा ये? जब आप ट्राई स्टेट बफर को 1 करोगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, मैंने बस अभी हिंट दी है इसको। तो अभी मैं इसको पुराने वाले सर्किट पे रहने देता हूँ, इसको फिर से नया ड्रा करेंगे, है ना। आप सोचना है इसको।